for 0.5 mm depth. So what will you do? So you will add the number of blows for 100 mm from 0.5, 0.5 to 0.6, 0.6 to 0.7 and 0.7 to 0.8. So total 300 mm you will add a point from 0.5 mm, 0.5 meter. So that will give you the value of number of blows for 500 mm from DCPT test. So which is known as NCD. So when we perform the DCPT test, the number of blows we get as compared to SPT test will be higher because we are penetrating using the cone. In SPT test we use the split spoon sampler which is hollow from inside, so there is not much resistance as compared to the resistance that is provided by the cone. So we need to mark at every 100 mm. We will perform up to 1 meter depth. beveled edge. So we need to mark at every 100. इसमें एन वैल्यू ज़्यादा होगा ना कंपेयर टू इसमें ज़्यादा आएगा वैल्यू. करेक्ट. Actually, SPT will be better, but DCPT, what DCPT will give? DCPT will give you the data point at every interval, like continuous data point. అది పాయింట్. SPT, there is like SPT, you make borehole, so there is chances that you can collect undisturbed specimen, disturbed specimen. In DCPT test, you cannot collect the specimen or sample. So this n value that we will calculate here, that we can correlate with the SPT value. So there are correlations. It is mentioned in the manual also. So the cone we are using is of 50 mm diameter. Sir, if SPT test is conducted at 50-meter interval, then how many DCPT you can do it in between? So like you can perform at some interval, like first perform in the between of these two, and if you see there is considerable change in the soil strata you feel, then you can like perform the in between the midpoint and another point also. So like that, if you see any variation in the strata, then you can reduce your interval. Fall height of hammer will be similar to that was in the SPT test. So the hammer weight and the fall height is similar to that in the SPT test. That is 750 mm of free fall height and 63.5 kg weight of hammer. So before performing the DCPT test, you need to make sure that the ground surface is plain. Otherwise it will go inclined. So marking we have to do at each 100 mm. First 100 mm we will consider as sitting back and not include in the calculation.
Using connecting rods, we can go as much as we want to go. So you need to connect the rods. So like up to what depth you have performed SPT test, similar depth we can go to DCP. Or else if the cone stops moving with considerable number of rows, then we need to stop. So for each 100 penetration, we will count the number of blows. So now we will start applying the blows. Seven. So that was 7, but you need to neglect this at considering it as skipping back. Eleven. So 0.1 meter 11. So we have started from the ground surface. So it is 0.1 meter. हो गया सर। आई थिंक इतनी करवाते 0.8 तक, जैसे अभी कर रहे हैं ऐसे ही हो गया 10. 0.7 लगा है। इतनी करा दें तो फिर कैलकुलेशन तो ये लोग करेंगे नहीं वैसे भी। जब पढ़ाते हैं यूजी तब करते हैं वो लोग कैलकुलेशन, पीजी यूजी तब करते हैं कि कोरिलेट भी करते हैं ना, कि जैसे 1 मीटर का एसपीटी है और 1 मीटर का डीसीपीटी है, सो व्हाट नंबर यू आर गेटिंग, सो कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें तो ये करते जाएंगे, रॉड और अटैच करके 1 मीटर तक चलेगा। अभी 0.7 मीटर तक जा रहे हैं मेरे ख्याल से। 0.7 मीटर तक ठीक है, 0.5 मीटर तक का एसपीटी है, यू कैन टेल द कोरिलेशन, है ना। तो अभी कितने पे निकलेगा 0.5 का 0.5 0.8 तक। तो कितना हुआ डीसीपीटी वैल्यू बताओ कितनी? 0.5 की कोई लिख रहा है?
अभी 0.5 पे आएगा. Already 8, no? N value is 8. 0.5 meter. 0.5 meter पे n value is 8. 8. So what will be NCD that we will see. हाँ 0.5 मीटर पे एनसीडी भी निकाला. एनसीडी मतलब डायनेमिक कोन पेनिट्रेशन एन वैल्यू, एंड एन मतलब नॉर्मल एन वैल्यू, एसपीटी एन वैल्यू. तो उतना ही कर देते हैं. ये कितने तक पहुंचा? तो ये करीब करीब कितना हो गया? 25-30 आ जाएगा इसका. हो गया. तो एक और कर लेते हैं, फिर कैलकुलेशन समझा देते हैं, वो ज्यादा बेटर है. करने का कोई मतलब नहीं. ये लास्ट वाला और कैलकुलेट कर लेते हैं. एक गया. बस अब रोक दो बस. हाँ अब बताओ कितना हुआ आपका, क्या क्या नंबर है? So we can calculate at 0.2 meter. So we have not gone up to 0.8. So what was the value after 0.2 meter? So at 0.2 meter what was the n? तो और करना पड़ेगा ना अभी. एक मिनट रुक जाओ. एक और कर लो. अभी 0.5 पे ही निकालना है. और एक करना पड़ेगा. एक और करना पड़ेगा ना. एक क्यों, दो करने दो और करने दो और करने पड़ेंगे. तो if you want to get at 0.5 meter, 30 centimeters. 0.5, 50 centimeters. இல்லை இது 30 தான் சார். 30 சென்டிமீட்டர் தப்பு இருக்கு. கரெக்ட். तो कितना हो गया? नहीं 3 नहीं. 300 mm पेनिट्रेशन चाहिए ना. हाँ तो फिर 3 चाहिए. हाँ 8, 10 and 11 कितना बनाइए? 29. LCD is 29 at 0.2 meter depth. हमें क्या चाहिए? 0.5 meter चाहिए. कितना गया? 50 போயிருக்கு. That's 50 other 50 गया. 1.5 लिख लीजिए. नेक्स्ट वाला. हाँ हाँ. फिर भी 5. Almost 3 times. 10 போக 40 போயிருக்கு. हाँ. இப்போ Almost 50 3 times value. DCBT. So if அது எப்படி we have to add it total complete. Every 10 centimeter இல்ல கம்பேர் பண்ணனும்னா கம்பேர் பார்க்கணும். என்ன காரிலேஷன் பார்க்கணும். so for 5.5 meter it will be the count the summation of at 0.5 meter plus at 0.6 meter plus at 0.7 meter. Which means 300 mm penetration from that level. From अच्छा, that ये level नीचे- 300 mm. 5 हुआ. 0.6 मीटर पे 5 हुआ है. 0.6 meter 5. 0.5 मीटर पे 3 था. 0.5 meter it was 3. 0.6 meter it was 5. अच्छा, नीचे सैचुरेटेड सॉइल होने से कम आने लग गए लॉज ना. सैचुरेटेड होगा तो गीला होगा ना, जल्दी घुस जाएगा. स्लेब लगा. 4 गया लगता है, एक और जाएगा. शुरू में ड्राई था तो ज़्यादा आ रहा था. हाँ ऊपर तो रहता है. सॉइल भी डिफरेंट है. शुरू का सॉइल में थोड़ा क्ले है, नीचे पे सैंड है ज़्यादा. हाँ It कितना will हुआ? be 3 plus 5 plus 4. नहीं 3 + 5 + 4 कितना हुआ? 12. राइट. सबको समझ आ गई कि एनसीडी कैसे निकाला? सो एट 0.5 मीटर यू नीड टू सी हाउ मच इज द पेनिट्रेशन अप टू 300 mm. राइट. सो दैट यू विल बी एट okay at 0.5 meter you need to see how much is the penetration up to 300 mm. So 300 mm like 3 times. So 0.5 meter you have some number that is 3. No, that is 3. That 0.6 meter it was 5. Then 0.7 meter 4. So all add then 12. So NCD at 0.5 meter is 12. Now N was how much it was? 8. From SPT it was 8. So can you look at your handout and see what is the correlation? 1.5. NCD is equal to एक correlation है, देखो आप प्लीज चेक करो. हाँ. So your NCD should be 1.5 times N. So N value was 8. So 8 times 1.5 is 12. So that means the strata is similar and it is not varying. 0.5
5 जब था तब कैलकुलेट करना शुरू किया ना 100. So for here, if you see the table which is correlating NCD to N, so we are using the 50 mm diameter cone and our depth is less than 3 meter. So our relation is NCD is equal to 1.5 times N. तो n कितना हुआ आपका? 8. नहीं 12 1.5 NCD was 12. डिवाइड बाई 1.5 ना 12 डिवाइड बाई 1.5 8 हुआ ना. तो अब 8 जो नंबर आपका आ गया, देन यू विल अप्लाई ओवरबर्डन करेक्शन और डायलेटेंसी वॉट एवर इज नीडेड एज यू डू फॉर द एसपीटी एंड देन फाइंड द फाई एंड क्यू एंड यू वॉट एवर नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी और वॉट एवर यू वांट टू फाइंड. So after converting NCD to N, we need to apply the corrections as per the requirement, and then we for SPT. So we will get SPT N value. Then we need to apply the corrections, and then we can use it to correlate with phi or any other entity we need. जैसे आप डिजाइन करते थे एसपीटी एन के लिए सेटलमेंट निकालते थे या हाँ, तो जैसे यू वांट टू डिजाइन फॉर यूजिंग एसपीटी डेटा, सेम थिंग यू कैन डू इट. वंस यू हैव एनसीडी, कन्वर्ट इनटू एन and then do all the things, that all corrections and settlement and bearing capacity whatever you want to find. ठीक है, so we can now leave and go back to the, अभी यहाँ पे तो कुछ काम नहीं,